Hello students, welcome to our channel Fisheries Science Education. So today we will be discussing about pond management, and this is the second part of our series AIEEE-ICAR-PG exam. So before starting our video, if you are new to this channel, do subscribe to our channel. You can also follow us on our Instagram page, and you can also join our Telegram channel for more notes in PDF format. So now let's start our video. Pond management. So in pond management there are three steps. First is pre-stocking management, second is stocking management, and third is post-stocking management. So before stocking, whatever the procedures are to be included are in pre-stocking management. तो जो प्रोसीजर जो स्टॉकिंग मैनेजमेंट से पहले हम फॉलो करेंगे वो प्री स्टॉकिंग मैनेजमेंट होगा. एंड इन स्टॉकिंग मैनेजमेंट वॉट एवर द थिंग्स वी आर डूइंग इन स्टॉकिंग द सीड्स दैट आर इंक्लूडेड इन स्टॉकिंग मैनेजमेंट. तो स्टॉकिंग मैनेजमेंट में सीड का जो स्टॉकिंग करेंगे उसमें जो जो प्रोसीजर होगा वो स्टॉकिंग मैनेजमेंट में होगा. एंड पोस्ट स्टॉकिंग मैनेजमेंट आफ्टर वॉट एवर द प्रोसीजर आफ्टर स्टॉकिंग इट इज़ पोस्ट स्टॉकिंग मैनेजमेंट. तो स्टॉकिंग मैनेजमेंट के बाद का जो प्रोसीजर होगा उसे हम पोस्ट स्टॉकिंग मैनेजमेंट बोलेंगे. तो पहले हम प्री स्टॉकिंग मैनेजमेंट के बारे में देखते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी अबाउट प्री स्टॉकिंग मैनेजमेंट. So pre-stocking management is the pond preparation phase which includes, तो जो pre-stocking management है वो एक pond preparation phase है. So in this stage we will prepare our pond for stocking. So and this stage phases include our preparation of pond. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने पॉन्ड को प्रिपेयर करेंगे फॉर स्टॉकिंग, एंड देन इरिडिकेशन ऑफ अनडिजायरेबल फिशेस एंड एक्वेटिक वीड्स. तो जो अनडिजायरेबल फिशेस जो हमें फिश नहीं चाहिए और एक्वेटिक वीड्स उसे हम रिमूव करेंगे. एंड देन लाइमिंग ऑफ पॉन्ड. तो हम पॉन्ड को लाइमिंग करेंगे. Then water filling, and then we will fill the water in pond, and diesel manuring and fertilizer. तो then after water filling हम pond को manure और fertilization करेंगे. So we will see all these procedures in detail further. तो हम ये सारे procedure को further detail में देखते हैं. First is preparation of pond. So in preparation of pond, first step is pond drying. तो पहला step है हमारा pond drying. तो pond bottom is allowed to dry in sunlight at least for 15 days. तो जो pond का जो bottom है उसे हम sun dry करेंगे for at least 15 days, and then it kills undesirable species and predatory fish. तो ये जो हम ड्राई करेंगे वो ड्राइंग जो अनडिजायरेबल फिशेस है या फिर प्रेडेटरी फिशेस है उसको किल करेगी. एंड इट हेल्प्स इन लाइमिंग एंड फर्टिलाइजेशन, एंड देन इट विल ऑल्सो हेल्प अस इन लाइमिंग एंड फर्टिलाइजेशन. तो लाइमिंग और फर्टिलाइजेशन में ये हेल्प करेगा. Then second is desilting or bottom mud excavation. तो in this process the excess mud of bottom should be removed. तो इस process में जो bottom की excess mud है, soil है, उसे हम remove करेंगे. So 10 to 12 centimeter of soil is removed in this process, desilting process. Then third is dike and canal reconstruction. So dike and canal is constructed in this process. So slope of dike must be 1:2 of pond length, and top should be of 3 feet wide. So slope of dike is simply a construction made for the allowing of water to enter or to remove. Okay, if there is so much water in our pond, then we can remove our pond from the dike. Or if our water level has decreased, then from dike we can again fill our pond of the water from the dike. So the slope of dike, it should be
ऑफ 1:2 ऑफ पॉन्ड लेंथ। तो इसका जो रेशो होगा वो 1:2 होगा पॉन्ड डेप्थ से, एंड देन टॉप व्यू मस्ट बी 3 feet वाइड। और सो स्लोप ऑफ द डाइक होगा वो 1:2 ऑफ पॉन्ड डेप्थ के रेशो में होगा, और इसका जो टॉप होगा वो 3 feet वाइड होगा। And then fourth is plowing or tilling of bottom. So when bottom soil cracks after removal of slit, plowing is done 2 times and then dried for 3 to 10 days. So as soon as the bottom becomes dry and that soil forms the crack, then plowing is done for 2 times, and then again we have to dry for 3 to 10 days. तो जैसे ही हमारा बॉटम होगा वो ड्राई हो जाएगा, तो जो सॉइल होगी उस पर क्रैक्स आ जाएंगे। तो वो क्रैक्स आने के बाद हम प्लगिंग करेंगे, एंड ये प्लगिंग 2 टाइम्स होगी, और ये प्लगिंग होने के बाद हम जो बॉटम है उसको 3 to 10 days ड्राई होने देंगे। And one note is that of February and April is better time. तो ये जो प्रोसेस हमने अब तक किया, पॉन्ड ड्राइंग, देन डीसिल्टिंग, देन डाइक एंड कैनल रिकंस्ट्रक्शन, प्लगिंग और टीलिंग ऑफ बॉटम, ये जो प्रोसेस किया, इस प्रोसेस को करने के लिए February to April है वो बेस्ट टाइम है इस प्रोसेस को करने के लिए। तो हमने क्या देखा कि पॉन्ड प्रिपरेशन में 4 प्रोसेस हुई। फर्स्ट इज पॉन्ड ड्राइंग, जिसमें हमने पॉन्ड को ड्राई कर दिया, एंड देन सेकेंड इज डीसिल्टिंग, इन विच वी हैव रिमूव्ड द एक्सेस मड from the bottom of a pond, and it should be 10 to 12 centimeter. And then third was dike and canal construction, in which we have kept the ratio of 1:2 to the pond depth, and the top view of the dike was 3 feet wide. And in fourth was plugging or tilling of bottom, in which after the pond dried, pond जब ड्राई हो गया तो उसके सॉइल पर कुछ क्रैक्स आ गए, तो after that crack हमने प्लगिंग किया, and it was for 2 times, and then we have dried it for 3 to 10 days. Okay, this and for best time for doing this process was February to April. So this was the pond preparation. And then our second was eradication of undesirable fishes and aquatic weeds. So हमने undesirable fishes और aquatic weeds को हमें remove करना है after doing that pond preparation method. So first, control of aquatic weeds. So first of all, we have to control the aquatic weeds. So there are 3 types of aquatic weeds. First is floating, submerged और emergent. So aquatic weeds जो है वो हमारे 3 types के, floating, submerged और emergent. And it hampers the primary productivity by absorbing available nutrients from water and soil and hinders sunlight penetration. तो इस एक्वेटिक वीड्स को रिमूव करना क्यों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट टू रिमूव दिस एक्वेटिक वीड? बिकॉज जो ये एक्वेटिक वीड है वो क्या करेगी, जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है उसे बहुत कम होने देगी, उसे हैम्पर करेगी. सो दिस एक्वेटिक वीड it will absorb all the nutrient from the water and soil, and also it will disturb the sunlight penetration. तो जैसे ही सनलाइट होगी वो हमारे वाटर में या फिर सॉइल में आएगी, एक्वेटिक वीड उसे रोक देंगी, उसे अंदर नहीं आने देंगी, और जो पॉन्ड पर जो न्यूट्रिशंस हमने डाले हैं वो सारी एक्वेटिक वीड एब्जॉर्ब कर लेंगी. तो इसीलिए एक्वेटिक वीड को रिमूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सो ऑल्सो इट डिक्रीजेस डिजॉल्व ऑक्सीजन लेवल, एंड ऑल्सो इट डिस्टर्ब्स फिश मूवमेंट. तो एक्वेटिक वीड्स है वो ऑक्सीजन लेवल को डिक्रीज करेंगी और जो फिश की मूवमेंट है उसे भी डिस्टर्ब करेगी. Then second is eradication of undesirable and predatory fishes. So जो हमें फिश की जो स्पीशीज हमें नहीं चाहिए उससे प्रेडेटरी फिशेस, जो फिश दूसरे फिश को अपना प्रेडेटर बनाकर अपना
न्यूट्रिएंट लेती है वो प्रेडेटर फिशेस, उसको रिमूव करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है. सो दिस इज डन बाय कंप्लीट ड्राइंग ऑफ पॉन्ड और बाय पॉइजनिंग. तो इस रिमूवल ऑफ प्रेडेटरी फिशेस एंड अनडिजायरेबल फिशेस इज डन बाय ड्राइंग एंड और बाय पॉइजनिंग. तो इसे ड्राइंग से भी कर सकते हैं या फिर पॉइजनिंग से भी कर सकते हैं. सो सम fish toxicants are, so some poisoning, this is poisoning which we are using in pond to kill the fishes are, so some fish toxicants are, first is rotenone and it kills fish species, not shrimp. So this rotenone will kill fish species but it will not kill shrimp. So if we apply it 2 to 3 ppm, then it will kill the fish and its toxicity lasts for 10 to 12 days. So if we have applied this rotenone and then it will kill the fishes till 10 to 12 days. After 10 to 12 days the rotenone toxicity will be over. So killed fishes are suitable for consumption. So this killed fishes the fishes which is been killed by rotenone is suitable for our consumption. We can eat that fish. तो हमने देखा हमारा पहला टॉक्सिकेंट था रोटिनॉन. तो ये रोटिनॉन जो है वो हमारी फिश को किल करेगा पर श्रिम्प को नहीं करेगा और इसे हम 2 to 3 ppm में अप्लाई करेंगे और इसकी जो टॉक्सिसिटी होगी, मतलब इसका जो टॉक्सिक नेचर है वो 10 to 12 डेज के लिए ही होगा. और जो फिश किल हुई है इस पॉइजनिंग से, वो फिश हम एज अ फूड उसे कंज्यूम कर सकते हैं. And next is tea seed cake. In this tea seed cake, the active ingredient which helps for killing is saponin. So saponin is present in tea seed cake. Due to this saponin, the fishes are being killed. So it is effective at 75 to 100 ppm. If we have applied tea seed cake at 75 to 100 ppm, then only it is effective. So in 75 to 100 ppm, total saponin content is 5 to 10 ppm. So toxicity lasts for 10 to 12 days and it is fit for human consumption. So we can consume this after it has been killed by tea seed cake. Then mova oil cake. In this 4 to 6% saponin is there and it has been killed at 250 ppm and its toxicity lasts for 10 to 15 days and it serves as manure too. तो ये जो मोवा ऑयल केक है उसे हम मैन्योर से भी यूज़ कर सकते हैं. तो हमने इरेडिक्शन ऑफ अनडिजायरेबल फिशेस एंड एक्वेटिक वीड्स में हमने देखा कि पहले हमने एक्वेटिक वीड्स को रिमूव किया एंड हमने एक्वेटिक वीड्स को क्यों रिमूव किया, क्योंकि वो जो सनलाइट को अंदर पेनिट्रेट नहीं करने देता और ऑक्सीजन लेवल डिक्रीज करता है, फिश के मूवमेंट को डिस्टर्ब करता है. एंड हमने देन इरेडिक्शन ऑफ अनडिजायरेबल एंड प्रेडेटरी फिशेस को रिमूव किया. उसके लिए हमने टॉक्सिकेंट यूज़ किया एंड द टॉक्सिकेंट वेर रोटिनॉन, टी सीड केक, मोवा ऑयल केक etc. And then next is liming of pond. So we have to do the liming in pond. So the range of liming material are used. The liming material which is used are first agriculture lime or calcite, which is CaCO3, and this is usually used in a water after stocking. Then dolomite, then calcium hydroxide or slaked lime CaOH twice, and then calcium oxide or quick lime. And this quick lime is preferred for liming in soil. एग्रीकल्चर लाइम है उसे हम वाटर में यूज़ करेंगे फॉर लाइमिंग आफ्टर स्टॉकिंग एंड दिस क्विक लाइम हम यूज़ करेंगे इन सॉइल फॉर लाइमिंग. So the objective of liming is to maintain pH of soil and water above 6 and increase productivity, and it also acts as both prophylactic and therapeutic. तो इस लाइमिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, हम क्यों लाइमिंग कर रहे पॉन्ड में, तो वो है कि हम पीएच है सॉइल और वाटर का उसे हम
मेंटेन रख रहे हैं अबव 6 में, और जो प्रोडक्टिविटी है उससे भी हम इंक्रीज कर रहे हैं. Then water filling is done after liming. So water filling is done after pond preparation. So जैसे ही pond preparation process हमारा ख़त्म हो जाता है, उसी के बाद water filling आएगा. So water depth is kept low. तो पहले जब हम फर्स्ट टाइम पॉन्ड में वाटर फिल करेंगे तब जो उसकी डेप्थ होगी वो लो रखेंगे. So after 1 to 2 weeks of manuring and fertilization, water depth is raised before stocking. So after water filling, we are doing manuring and fertilization. So after 1 to 2 weeks of manuring and fertilization, water depth is increased before stocking. So after fertilizing, then we have to again increase the water depth and then we have to stock. So if required, water may let in from nearby sources in summer or drained out during monsoon to maintain desirable depth. तो अगर रिक्वायर हो तो हम जो वाटर है उसको समर में पॉन्ड में फिल करेंगे, और अगर मॉनसून है तो उस वक्त हम जो पॉन्ड में एक्स्ट्रा वाटर है उसे हम रिमूव करेंगे, ताकि हमारी जो डेप्थ है, हमारी डिज़ायरेबल डेप्थ है, जो हमें डेप्थ चाहिए वो हम मेंटेन कर सकें. तो पहले हमने पॉन्ड प्रिपरेशन हो गया तो हमने वाटर फिलिंग किया. देन हमने जो वाटर की डेप्थ थी वो स्टार्टिंग में लो रखी. देन उस लो डेप्थ में हमने मैन्योरिंग किया और फर्टिलाइजेशन किया. देन आफ्टर 1 to 2 वीक्स हमने उसमें वाटर की जो डेप्थ है वो इंक्रीज़ कर दी. एंड देन हम स्टॉकिंग करेंगे. Then manuring and fertilization. So it is done to increase natural food and level of nitrogen, phosphorus and potassium, etc. So here it's best time, not beat. So best time it for manuring and fertilization is in morning, that is 9 to 10 o'clock. Then two types of fertilization is done. There are two types of fertilization, organic and inorganic. So in organic we are using cow dung, organic manure used for development of natural food, and cow dung is commonly used. So inorganic fertilizer, it is urea, which is used at 20 to 30 kg per hectare. So in pre-stocking management, we have first of all seen that pond is prepared by pond drying, and then desilting or bottom mud excavation, in which we have removed the excess mud from the bottom. And then in third was dike and canal construction. We have done the construction of dike and canal, and then we have done the plowing or tilling of the bottom, in which after the cracks are formed we have done the plowing. And then we have removed the unwanted fishes and aquatic weeds, in which we have removed aquatic weeds first, and then we have removed the predatory or undesirable fishes by using the toxicants such as rotenone, tea seed cake, mahua oil cake. And then we have done the liming of pond, and in liming we have used the many liming materials such as calcium hydroxide, slaked lime, quick lime, etc. And for water we have used the agriculture lime, and for the soil we have preferred the quick lime. And then after liming we have done the water filling. So as soon as our pond is prepared, we have done the water filling, in which we have first kept the depth of water low, and then after manuring and fertilization, then after 1 to 2 weeks we have again increased the depth before stocking. And then after water filling we have to do the manuring and fertilization, in which we have done this to increase our natural food. And best time was from 9 to 10 o'clock. And there were two types of fertilizer used: organic, in which we were using the cow dung, and inorganic, in which we were using the urea. Okay, so this was the pre-stocking management, and now stocking management. So stocking management is one. In stocking management we have to stock the fish seed. So 1 to 2 days before stocking, a hapa is fixed on pond, and some stocking material should be put inside hapa. So
before stocking, we are placing one hapa. So hapa is as here we have shown in this figure. This is the hapa. It is a small square like structure, and this hapa is fixed in a pond, and some of the stocking material which we have to stock in a pond, it is taken in small amount, and it has been put inside that hapa. And if no distress and mortality after 24 hours, then pond is ready for stocking. So after we have kept that stocking material inside hapa, and after 24 hours, if we see that there is no mortality or no stress uh, in that stocking material, then we can say that our pond is ready for stocking. We can stock our seeds inside the pond. ओके, सो इन स्टॉकिंग मैनेजमेंट हमने क्या देखा कि स्टॉकिंग करने से पहले हमने एक हापा को फिक्स किया इन अ पॉन्ड, एंड देन इन हापा हमने जो स्टॉकिंग मटेरियल था हमारा वो कुछ थोड़ा अमाउंट में लेकर उस हापा में डाला, एंड आफ्टर 24 आवर्स के बाद अगर हमने देखा कि उसमें कोई मोर्टेलिटी नहीं है या फिर उसमें कोई स्ट्रेस नहीं है, तो हमारा पॉन्ड है रेडी है फॉर स्टॉकिंग, तो हम इस पॉन्ड में स्टॉक कर सकते हैं. स्टॉकिंग इज डन वेरी केयरफुली टू अवॉइड पोस्ट स्टॉकिंग मोर्टेलिटी. तो स्टॉकिंग है हमें बहुत ही केयरफुली करना है ताकि जो पोस्ट स्टॉकिंग मोर्टेलिटी है वो हमारी बहुत कम हो. So to minimize this, stock should be slowly adapted to temperature and water quality in pond. तो इस पोस्ट स्टॉकिंग मोर्टेलिटी को अगर हमें मिनिमाइज करना है, तो जो स्टॉक है हमारा, उससे हम स्लोली टेम्परेचर और हमारे वाटर क्वालिटी है हमारे पॉन्ड का, उससे अडेप्ट करना है. And to do this, we have to open the mouth of bag or container and slowly add pond water in phases after 15 to 20 minutes, and tilt the bag in pond so that stock can freely swim in water. So हमें इस स्टॉक को अडेप्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम अपने बैग का माउथ ओपन करेंगे और फिर स्लोली जो हमारा पॉन्ड का वाटर है वो हम अपने बैग में डालेंगे बहुत ही स्लोली फेसिस में आफ्टर 15 to 20 मिनट्स. और 15 to 20 मिनट्स में हम थोड़ा वाटर, अपना पॉन्ड का वाटर बैग में डालेंगे थोड़ा करके, एंड धीरे धीरे करके हम डालेंगे. एंड देन वी हैव टू टिल्ट मीन्स वी हैव टू समवॉट स्लाइड द बैग. थोड़ा सा हम बैग को अपने पॉन्ड की तरफ मोड़ेंगे, एंड देन अगर हम पॉन्ड की तरफ मोड़ेंगे, एंड देन जो हमारा स्टॉक होगा वो फ्रीली स्विम करेगा हमारे पॉन्ड में. फ्रीली वो हमारे बैग से होकर हमारे पॉन्ड में मूव करेगा. तो ये हमारा स्टॉकिंग का प्रोसेस था. तो इससे ऐसे हम स्टॉकिंग करेंगे. तो दिस वाज द प्रोसेस ऑफ स्टॉकिंग, एंड इट इज़ डन इन कूल इवनिंग आवर्स. तो स्टॉकिंग होगा वो हमारे कूल इवनिंग आवर्स में ही होगा, क्योंकि अगर जब टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा तो जो हमारी स्टॉकिंग है उसमें हम पोस्ट स्टॉकिंग मोर्टेलिटीज़ बहुत ही ज़्यादा होगी, इसीलिए हम इसे कूल इवनिंग में करेंगे. देन पोस्ट स्टॉकिंग मैनेजमेंट. So it includes activities after stocking of fingerlings up to the final harvesting of fish from ponds. So in post stocking management, after we have done the stocking, and then we have to harvest the fish from the pond, the activities which are to be included during this, that are included in post stocking management. तो जो एक्टिविटीज़ हम स्टॉकिंग पॉन्ड में स्टॉकिंग हो गया उसके बाद से लेकर जो हार्वेस्टिंग तक जो हमारी एक्टिविटीज़ इंक्लूड होगी उसे हम पोस्ट स्टॉकिंग मैनेजमेंट बोलेंगे. तो वो एक्टिविटीज़ है मैन्यूरिंग, फीडिंग, ग्रोथ एंड हेल्थ मॉनिटरिंग, वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग एंड हार्वेस्टिंग. So let's see all this in detail. So first is manuring. So regular addition of manure or fertilization in small quantity is required to ensure growth of natural fish food. जो मैन्योर है उसे हम स्मॉल क्वालिटी में
ऐड करेंगे रेगुलरली, ताकि जो हमारा नेचुरल फूड है वो हमारे पॉन्ड में मेंटेन रहे. So it should be done monthly or fortnight at regular interval and quantity should be in split dose. तो जो हमारा ये मैन्योरिंग है उसे हम या तो मंथली करेंगे या फिर फोर्टनाइट, ये रेगुलर इंटरवल में होना चाहिए. और जो क्वांटिटीज़ है उसे हम स्प्लिट डोज में करेंगे. स्प्लिट डोज में मीन्स उसे हम स्प्लिट करेंगे 2 पार्ट्स में या फिर 3 पार्ट्स में. And then we have to do the feeding, supplementary feeding, and this depends on the intensity of fish culture. Okay, so if we are doing the extensive culture, then in that no feeding is required. If we are doing the intensive culture, then we have to add the supplementary feed, and if we are doing semi-intensive, then we don't have to add supplementary feed, we have to just do the fertilization, no supplementary feed is required. Okay, so depending upon the density of fish culture, we have to do the supplementary feeding. So the most expensive operation in aquaculture. So this process, ये जो process है वो सबसे ज़्यादा expensive operation है aquaculture में, क्योंकि जो feeding का जो price है वही सबसे ज़्यादा होता है. So if we have done the underfeeding, means if we have feeding is not in appropriate level, then our stocking will have poor growth. And if we have done the overfeeding, then we will increase our feeding cost. Okay, then our aquaculture will be very expensive, or this operation will be very expensive. So the limit should be maintained in feeding. Okay, if we have done very low feeding, then our growth will be very poor. If we have done too much of feeding, then we will increase our feeding cost. So oil cake, rice or wheat bran, grain fodder, and other agriculture and slaughterhouse byproduct can be used as fish feeding. So all this material we can use for our fish feed. Then growth and health monitoring. So regular sampling of fish is required. तो हमें हमारी जो फिश है उसका हम सैम्पलिंग करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ताकि हम उसका ग्रोथ और हेल्थ मॉनिटर कर सके. सो दिस इज़ डन एटलीस्ट वंस इन अ मंथ. तो ये सैम्पलिंग होगा वो वंस इन अ मंथ करना होगा. सो सैम्पलिंग डेटा ऑफ ग्रोथ रेट एंड हेल्थ इज़ रिकॉर्डेड. तो ये जो सैम्पलिंग का जो डेटा होगा ग्रोथ और हेल्थ के बारे में वो रिकॉर्ड होगा. एंड देन अनवांटेड फिश इज रिमूव्ड. सो while checking this growth and health monitoring, if we find some unwanted fish, then we can remove that unwanted fish. And if symptoms of disease is found, then prophylactic treatment, which is KMNO4 at 250 to 500 ppm per minute, it should be done before releasing fish in pond. So if during health monitoring, if we have found that some of the fishes are showing some symptoms of disease, then we can do the prophylactic treatment. So in prophylactic treatment, KMNO4 is so in some quantity of water we have to add the KMNO4 at 250 to 500 ppm per minute, and this should be done to the fishes before releasing it into the pond. Okay, so growth and health monitoring में हमने रेगुलर सैम्पलिंग किया फिश का, और ये एटलीस्ट वंस इन अ मंथ किया, और इसमें ग्रोथ और हेल्थ से हमने रिकॉर्ड किया, और जो अनवांटेड फिशेस थी उसे रिमूव कर दी. और अगर कोई फिशेस में कोई सिम्टम्स आया डिसीजेस का, तो इसमें प्रोफाइलेटिव ट्रीटमेंट किया, जिसमें हमने KMNO4 को 250 टू 500 ppm पर मिनट में डाला और उस फिश को ट्रीट किया, एंड फिर उस फिश को हमने पॉन्ड में रिलीज कर दिया. So now next is water quality parameters. So these are the parameters and this range we have to follow during our pond management. So first parameter is water color. So it should be greenish brown. Our water should be greenish brown. Transparency, it should be 25 to 50 centimeter. Then pH should be 7 to 8.5. And then dissolved oxygen, it should be 5 ppm. Then free carbon dioxide, it should be 1.5 ppm.
Then inorganic nitrogen, it should be 0.2 ppm, and inorganic phosphorus, it should be 0.2 ppm. Then harvesting of fish. So in harvesting we have to remove the fish from pond. So in harvesting there is also a partial harvesting and restocking. And then it has been done for better yield in terms of fish production per area. Bigger size fish should be harvested and sold in batches, and pond is restocked with the same number of fishes of some species. So on partial harvesting, what we are doing is, if some of the fishes are of bigger size, then we are harvesting that fishes, and we are letting the small fishes to gain some size, and then we are selling it to the market. And also again in restocking, what we are doing, that we are again stocking the same number of fishes which we have stocked earlier in the same pond. Okay, so this was the harvesting of fishes. So this is the question of our today's video, that fish poison of plant origin is. So which is the poison which is of plant origin? So our option is thiametron, aldrin, mova oil cake, and non. So comment in comment box the correct answer. We are waiting for your answer. So in the last video we have asked one question, that which is the aquaculture system and the basis of its intensity, which is eco-friendly and sustainable. So the correct answer is semi-intensive fish farming system, as in that system we are just using small ponds and we are adding only fertilizer for the growth of natural food, and we are not adding any supplementary feed or any other thing which harms our environment. So it is the sustainable and eco-friendly method. But we have seen only some of have answered that question. So we request you, if you know the answer, do comment in our comment box. We will be waiting for your answer of this question. So thank you so much. Happy learning.